Bismillah Rahman Rahim. I'm your instructor Saira Khan for the course Application of Statistics in Psychology. This is our fifth lecture. Today we will discuss central tendency. Central tendency, as the name indicates, is the center of something. This something in statistics is the data. I have discussed what is data in my previous lectures. Data, which we have collected during gathering information from the sample which has been drawn from the population. This data has been collected from the sample in the form of numerical data. And we have to find the central tendency for this numerical data and draw some information about the sample and the population. The contents which we will cover today is the central tendency and three methods to find the central tendency of the data, which is mean, median, and mode. After gathering and arranging and summarizing the collected data, to describe the data, usually we find the central tendency of the data. In general terms, central tendency is a statistical measure that determines a single value that accurately describes the center of the distribution and represents the entire distribution of the score. For example, if there are 60 students in a class and the average marks of the 60 students can be calculated by finding the central tendency of that class, and the single value can represent the central tendency of that class of obtaining the marks in that particular subject. So the single value, only the single value, can represent the central, the whole data. Central tendency, obviously a descriptive summary of the data set. Only a single value provides this descriptive summary. The goal of the central tendency is to identify the single value that is best representative for the entire set of data. This single value will give some information, can represent entire set of data. By identifying the average score, we can say this central tendency also the average. By identifying the average score, central tendency allows researcher to summarize or condense a large set of data in the single value. अभी जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं और उन 60 स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट में मार्क्स हमने कलेक्ट किए। जाहिर है वो 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास 60 लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। अब इन 60 लोगों के मार्क्स को जब हम एवरेज मालूम कर लेते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी मालूम कर लेते हैं, तो वो 60 डेटा सेट के बजाय हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हो जाती है जो कि उस क्लास की एवरेज टेंडेंसी को, सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है
कि ये क्लास इस सब्जेक्ट में इतने परसेंट नंबर इसने लिए हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज स्कोर जो है, ये रिसर्चर्स को एक तो डेटा को समराइज करने में मदद करते हैं, कंडेंस करने में मदद देते हैं, और लार्ज सेट ऑफ डाटा के बजाय एक सिंगल वैल्यू से हम उस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Thus, the central tendency serve as the descriptive statistics which can describe our data because it allows researcher to describe or represent a set of data in a very simplified and concise form. In addition, it is possible to compare two or more set of data by simply comparing the average score for one set versus the average score for another. Usually, when two or more different data sets are to be compared, it is necessary to condense the data. But for the comparison, the condensation of the data set into frequency distribution and visual representation are not enough. It is necessary to summarize the data set in a single value. Such value usually somewhere in the center and represent the entire data set, and hence it is called measure of central tendency or average. It is essential that central tendency be measured by an objective and well-defined procedures so that others will understand exactly how the average value was obtained and can duplicate the process. अगर रिसर्चर ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करता है जो कि ऑब्जेक्टिव और वेल डिफाइंड ना हो, तो उसके रिजल्ट्स को ना तो दूसरे रिसर्चर्स समझ सकते हैं और ना ही उन रिजल्ट्स को डुप्लीकेट किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी 60 स्टूडेंट्स की और उनके एवरेज मार्क्स की। अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ उन 60 आइटम से या 60 जो स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं उनसे मीन मैं कैलकुलेट करती हूँ, जो कि मेथड बहुत ही ऑब्जेक्टिव होगा है, जो कि वेल डिफाइंड है उस मेथड से, तो कोई और भी अगर कैलकुलेट करता है उसी मेथड से उन्हीं एवरेज स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को, तो वो भी वही सिंगल वैल्यू आएगी जो मैं सिंगल वैल्यू निकालूंगी। तो अगर methods for finding the central tendency are objective and well defined, then others can understand exactly how the average value has been calculated, and they can also duplicate the process. Now, no single procedure always produce a good representative value. We have quantitative data or ratio data. Yes. Nominal data and which is categorical, and also the ratio data. We can also have ordinal data and interval data. टाइप ऑफ डाटा जिस तरह का होगा उसी तरह का हम मेथड इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर द मीडियन,
Actually, mean divide the entire set of data into two equal halves. Median determines the middle value of the dataset, listed in an ascending order. This value divides, as I have already said, this value divides the lower half from the upper or the highest half of the data. If the scores in the distribution are listed in order, in ascending order, from the smallest to the largest, the median is defined as the midpoint of the list. The median divides the scores so that 50% of the scores in the distribution have the values that are equal to or less than the median. Computation of the median requires the scores that can be placed in ranked order, which is from the smallest to the largest, and are measured on an ordinal interval or the ratio scale. Usually median can be found by simpling counting procedure. मतलब हमें अनग्रुप डेटा से बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिंपली हम डेटा सेट को अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से अगर हमारे पास ऑड एंटिटीज़ हैं डेटा सेट की, तो जो मिडल मोस्ट जो भी वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन होगी. और अगर हमारे पास जो डाटा सेट की एंटिटीज़ हैं वो इवन हैं, तो हम सेंट्रल टू जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा. ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट अनग्रुप डेटा से इसी तरह से हम बगैर किसी कैलकुलेशन के भी मालूम कर सकते हैं. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में बाकायदा इसके फार्मूलाज हैं, हम फार्मूलाज को देखेंगे भी और उनसे हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे भी. With an odd number of scores, list the values in order, and the median is the middle score in the list. The same way, with an even number of scores, list the values in order, and the median is the halfway between the middle two scores. वही बात है कि मिडिल टू स्कोर्स को हम 2 पे प्लस करके डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ उसका कर लेंगे, तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी. इफ द स्कोर्स आर the measurement of the continuous variable, it is possible to find the median by first placing the scores in the frequency distribution histogram, and each score represented by a box in the graph. Then draw the vertical line through the distribution so that exactly half the box are on the each side of the line. The median is defined by the location of the line. This is the graphical calculation of the median. One advantage of the median is that it is relatively unaffected by the extreme scores. जैसे कि हमने मीन में कहा कि मीन जो है वो बहुत ज़्यादा extreme values के से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है. Thus the median tend to stay in the center of the distribution even when there are few extreme scores or when the distribution is secured. In these situations, the median serves as the good alternative to the mean. These are the formulas for the ungrouped data. Median can be calculated by counting all the scores and plus 1 and divided by 2. This is when n is odd. यानी अगर हमारे पास 5 लोगों का डेटा है तो उस 5 में हम 1 प्लस करेंगे, n हमारे पास 5 होगा, 5 प्लस 1 और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने तरतीब लगाई है, जो हमने सेंडिंग ऑर्डर में स्कोर्स लिखे हैं,
उसमें जो थर्ड वैल्यू होगी, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, दैट विल बी आवर मीन. द सेम वे व्हेन द n इज इवन, हम n/2 टूथ वैल्यू लेंगे, यानी अगर बिलफर्ज हमारे पास 6 वैल्यूज हैं तो n/2 थर्ड वैल्यू और n/2 में प्लस करके, यानी थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को लिख के हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो मीडियन आ जाएगा. ये 2 पे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड वैल्यू, हमारी जो n/2 वैल्यू, अगर 6 वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पे थर्ड वैल्यू आ जाएगी. थर्ड वैल्यू जो भी स्कोर्स में होगी, और यहाँ पर हमारे पास फोर्थ वैल्यू आ जाएगी. फोर्थ वैल्यू जो भी होगी, तो इन दोनों को हम उन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मीडियन आ जाएगा. सेम वे जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि when the even number of the score list the value in order and the median is the halfway between the middle two scores. This formula is the same as this description. Okay. This is a calculation of median from the ungrouped data, and there is some odd number. First step, we will arrange in ascending order or the descending order, most preferably in the ascending order. When we write these set of data in an ascending order, this is the ascending order of the data 1 2 3 5 6 8 and 9. मीडियन जैसे कि फॉर्मूला था 1+n+1/2th आइटम. अब n कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 7 है. 7 + 1 / 2 is the fourth item. What is the fourth item of this ascending ordered data? 1 2 3 4. Fourth item is 5. Median will be the 5. The same way, if the data set is even, when we first we arrange the data set, then n/2th value, n हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8/2 will be the fourth value or the fourth item. In the same way, n/2 plus 1 is missing here, plus 1, this will be 8/2 plus 1. This will be the fifth value and divided by 2. Fourth value from the data is 1 2 3 4 is 5. Okay, and the fifth value is 1 2 3 4 5 is 6. We will add these two values and divide it by 2, and we will get 5.5. 5.5 is the median of this data set. This is the formula for the group data, which is median is equal to L plus H/F n/2 minus C. L is the lower class boundary of the model class, which selected class, and frequency of the median class, and n is this n is the summation f, the number of values or the total frequency, and this C is the cumulative frequency of the class.
and h is the class interval or the size of the model class. ये सारी बातें लोअर क्लास बाउंड्री and the cumulative frequency and the class interval or the class interval size, ये सब बातें हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस फॉर्मूले को के ज़रिए मीडियन को मालूम करना। ये हमारे पास एक डेटा सेट है विच इज़ ओके, ये हमारे पास 60 to 64 ये हमारे पास एक डेटा सेट है। ओके, अब इसकी क्लास बाउंड, सबसे पहले हमें इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। जब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनानी है। हमने हर लोअर जो क्लास लिमिट है इसमें से 0.5 जो है वो माइनस कर देना है और हर जो अपर क्लास है हमारे पास उसमें हमने 0.5 जो है वो प्लस कर देना है। तो इसी तरह से हर क्लास इंटरवल के साथ हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए, इसमें से 0.5 माइनस किया तो ये 59.5 आ गया और इसमें प्लस किया तो 64.5 आ गया। इसी तरह से हम सारी जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं उनको हम क्लास बाउंड्रीज में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का तरीका बताया था कि कैसे हमने इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या होती है और किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ा था। तो अगर आप को ना पता चल रहा हो कि किस तरह से इसको मालूम करना है तो आप वहाँ से भी मेरे उस लेक्चर को भी सुन सकते हैं। हम पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिख देंगे और अगली फ्रीक्वेंसी को उसमें प्लस करके लिखेंगे और फिर उससे अगली को उसमें प्लस करके लिखेंगे, उससे अगली को उसमें प्लस करके लिखेंगे, उससे अगली को उसमें प्लस करके लिखेंगे और उससे अगली को आखिर वाली में प्लस करके लिखेंगे। अच्छा, इसका जो आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे इसके टोटल, ये हमारा चेक हो सकता है कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके टोटल के बराबर होगी। अब हमने चूँकि पढ़ा है कि मीडियन जो है वो डिवाइड कर देती है डेटा सेट को 2 इक्वल हाफ्स में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमने मीडियन मालूम करने के लिए फ्रॉम ग्रुप डेटा करना है वो ये कि हम n/2 आइटम मालूम करेंगे। सबसे पहले n से मुराद मैंने पहले भी आपको बताया इधर इज अ समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसको अगर हम प्लस करते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फ्रीक्वेंसी का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आखिरी क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होंगे, यानी हमारे पास समेशन f जो है वो है 36। 36 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18th आइटम। हम यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 18th आइटम या 18 कहाँ लाए करता है। ये 15 है, ज़ाहिर है 18 से कम है, ये 34 है, ये 18 से बहुत ज़्यादा है। 27 जो है इसके अंदर 18th क्लास या 18th आइटम जो है ना वो पाया जाएगा। तो हम इस 27 वाली सारी जो क्लास इंटरवल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी क्लास इंटरवल की हम क्लास बाउंड्री की हम लोअर लिमिट लेंगे, इसी क्लास की हम फ्रीक्वेंसी लेंगे और
जो हमारे फार्मूले में सी इस्तेमाल होना है या सी एफ इस्तेमाल होना है, वो इस सिलेक्टेड क्लास का से ऊपर वाला सी एफ इस्तेमाल होना है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला है लोअर लिमिट, यहाँ पर एल जो है लोअर लिमिट जो है वो 74.5 होगी। और हाइट ऑफ क्लास मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था कि कैसे कैलकुलेट करनी है। हम इस तरह से वर्टिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। हम 18 में से 75 या 74 में से 69 या 89 में से 84 को माइनस करके फिर हम क्लास की हाइट मालूम करेंगे। ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, इसमें ये बात मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताई थी। तो एच हमारा यानी क्लास इंटरवल जो है वो कितना है, 5 है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है, और n/2 हमारा 18 है, और c जो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने इस फार्मूले में पुट करनी है वो 15 है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मीडियन हमारे पास आएगा वो 75.75 आएगा। तो ये देखेंगे कि मीडियन भी तकरीबन सारे डाटा सेट के दरमियान में ही पाया जाता है, क्योंकि ये भी एक सेंटर टेंडेंसी मालूम करने का एक तरीका है। तो इस तरह से आज हमने समझा है कि सेंटर टेंडेंसी क्या होती है, मीन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, एंड हाउ द मीन इज हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सेट। उसको हमने मीन को ग्रुप डाटा से और अनग्रुप डाटा से दोनों से मालूम करना सीखा। इसके बाद हमने मीडियन देखा कि क्या है, कि किस तरह से ये डिवाइड कर देता है एक डेटा सेट को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और द वैल्यू ऑफ द मीडियन डिवाइड्स द होल डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमने मीडियन को देखा कि किस तरह से कौन से डेटा सेट के ऊपर ये हम मीडियन मालूम कर सकते हैं इसका, जिस तरह से हम इंटरवल डाटा, रेशो डाटा और जो ऑर्डिनल डेटा है सब का जो मीन है वो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इससे भी हमने ग्रुप डेटा से भी और अनग्रुप डेटा से दोनों से हमने मीन को कैलकुलेट करना सीखा है। एक तीसरी जो तरीका है, तीसरा जो मेथड है फॉर फाइंडिंग द सेंटर टेंडेंसी इज द मॉड। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। मॉड के बारे में हम तफसील से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और सेंटर बाकी जो हमारा लेक्चर होगा सेंटर टेंडेंसी के बारे में जो अहम बातें होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इस लेक्चर के लिए हमने सेंटर टेंडेंसी, मीन एंड मीडियन सीखा है। बाकी सेंटर टेंडेंसी के बारे में जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।